Hello everyone, good afternoon and welcome to PendulumEdu. This is the official channel of PendulumEdu and I welcome you here and I'm back with another practice session for banking. This is for IBPS CLERK Prelims 2020 that we're going to discuss today. I hope that you all are set for this and you guys have joined me in. Those who have joined me, I would request you all to quickly like the session, hit the like button, and please share the session with all your friends and your known ones who you think need these sessions. Okay, so do that. Also subscribe the channel अगर आपने channel subscribe नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करते वक्त ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। साथ के साथ बैंकिंग की जो हाफ ईयरली बुक है वो लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। करंट अफेयर्स की हाफ ईयरली बुक ऑलरेडी जो है वो आ चुकी है, तो आप इसको जरूर से जाके हमारे वेबसाइट PendulumEdu के ई बुक सेक्शन में आप जा सकते हैं और वहां पर आपको ये हाफ ईयरली बुक्स मिल जाएंगी। गाइस आप PendulumEdu ये आप कोड यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको 20% ऑफ मिल सकता है। आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा once you use or once you apply this code, that's PendulumEdu. Okay, I hope that's clear to all of you. लर्नर्स, भाई ये करंट अफेयर्स आपको पता है बैंकिंग का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली मतलब जनवरी से जून 2021 की आपको ये जो बुक है वो हाफ ईयरली बुक वो रिलीज की गई है, तो प्लीज जरूर से जाकर इसको देखेंगे एंड डेफिनेटली इसका इस्तेमाल सही ढंग से करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू हो रहा है आज का जो हमारा सेशन है। देखिएगा, फॉर अ ग्लोबल हजार्ड टू रियली गेट रिस्पेक्ट दीज डेज मस्ट बी थ्रेटन Emergedon. Okay, climate change, for instance, is the stuff of apocalyptic movies. It is about flooding, fire, and famine. Famine आप सबको पता है, it's like भूख, like जब खाने की कमी हो जाती है। ठीक है, The loss of biodiversity, on the other hand, the shrinking spread. Shrinking spread का मतलब जब कोई चीज एकदम narrow होने लगता है। ठीक है, that shrinking spread of species on the planet ranks further down the scale. This is about dying bumblebees in Poland, fewer species of fish in the Red Sea, red squirrels being kicked out by grey ones. It is not the stuff of film starring Dennis Quaid as a diverse scientist who was right all along and tends to reach headlines as a worry mostly for the bees and squirrels involved, with perhaps a line or two from experts about the knock-on effects. It does not seem to threaten the rest of us. कहते हैं कि ये बाकी सबके लिए threatening नहीं लग रहा है, but है एक्चुअली जो लोग इसको फेस कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, That perspective is changing. वो पर्सपेक्टिव बदल रहा है कि कोई चीज कहीं और हो रही है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक वो चीज हमें इफेक्ट नहीं कर रही है, but ये पर्सपेक्टिव बदल रहा है। The first UN study into the natural systems propping up the human diet has found that shrinking biodiversity is affecting Earth's capacity to produce food. भाई अगर बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो जो खाना प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है हमारी धरती की वो भी अफेक्ट हो रही है। Our food, it says, is now under severe threat. The report finds that 20% of the Earth's vegetative surface has become less productive, and what is growing on it is one notch away from being wiped out. The report mentions the Irish potato famine and cereal crop failures in the US in the 20th century and asks us to expect more of that in the future. तो भाई ऐसा हमें ये तो numbers दे दिए गए हैं, this is the numerical value, this is the numbers that we're talking about. फैक्ट्स हमेशा क्यों कॉम्प्रिहेंशन में या किसी भी पैसेज में इसलिए दिए जाते हैं कि देखो, एक तो रेलेवेंस उस चीज का और दूसरी चीज उस न्यूज की वैलिडिटी, वेरासिटी। What is veracity? Veracity is a noun subject that means truthfulness. उसकी सच्चाई जो है थोड़ी सी बढ़ जाती। ठीक है, अच्छा कहते हैं कि 20th century if we see and if we analyze, then it asks us to be more careful for the future.
How have we created this situation? Well, primarily because of our desperate attempts to produce food in the first place. Forests are being cut down to make space for crop fields, and crop fields are being sprayed with pesticides and herbicide, which leaches the soil and kills off vital pollinators such as bees, birds and bats. तो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं क्रॉप लैंड के लिए, फिर क्रॉप लैंड में हम पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो मर जा रहे हैं. Cutting down trees and big plants increases the risk of flooding. Mostly though, the problem is that we are relying on monocultures. Relying means हम dependent हैं on monocultures, just one variety of potato or of sugarcane, which is a big risk. हम मोनोकल्चर पर जा रहे हैं, हम एक ही वैरायटी ऑफ पोटैटो, हम एक ही वैरायटी ऑफ शुगर केन चाहिए, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है. कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ सकते हैं अगर हम एक ही वैरायटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और उसी की कल्टिवेशन करते रहेंगे, दैट वुड बी अ ग्रेट रिस्क फॉर अस. It means a single outbreak of disease or climate shift could wipe our large portion of the world's food supply. सीधी सी बात है भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एक ही टाइप के फूड पर डिपेंडेंट हैं, तो यदि अगर जो जैसे हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, चेंजेस की या जो इम्पैक्ट हो रहा है, सो इफ वी सी इफ अगर कोई ऐसा डिजीज आता है विच हैम्पर्स द एनवायरमेंट, विच हैम्पर्स द क्लाइमेट एंड वी डू नॉट गेट द फूड, वो क्रॉप वो कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी अगर, तो हमें कैसे खाना मिलेगा, like right? So that's what we're talking about. We're talking world's food supply. 2/3 of the crops the world produces comprises just 9 species marching across the globe, as the other 6,000 cultivated plant species wither along with wild food sources. So this again works up. Okay, so if you see 2/3 of the crops the world produces comprises just 9 species, कहते हैं कि सिर्फ 9 ही species हम देखते हैं जो कि पूरे मार्चिंग अक्रॉस द ग्लोब का मतलब है जो कि सब जगह पाए जाते हैं या फैले हुए हैं, as other 6,000 cultivated plant species wither along with wild food sources. 6,000 और प्लांट स्पीशीज हैं बट वो ऐसे ही वाइल्ड फूड सोर्सेस के साथ पड़े हुए हैं. Progress is possible. Farmers need to diversify and plant wild species, but it has so far been too slow. Just 1% of US farmland is certified organic. This should certainly change. कहते हैं अभी US में ही सिर्फ 1% of farmland को organic घोषित किया है, बाकी नहीं. Farmers बहुत कोशिश कर रहे हैं डाइवर्सिफाई करने की चीज़ों को, और यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक जो है ये हमें फिल करना होगा. अभी हमें आगे क्वेश्चन दिया होगा इससे रिलेटेड, तो हम इसे फिल इन करेंगे. प्रोग्रेस कहते हैं पॉसिबल है, संभव है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट? It's not possible that we sit and things can happen on their own. That's not going to happen. We have to work towards it. Okay. So question, which of the following can be correctly inferred from the given passage? Loss of biodiversity is a serious issue and must be addressed to sustain food supply. ठीक है, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, हमें एड्रेस करना ही चाहिए अगर हमें फूड सप्लाई को सस्टेन करना है. तो organic farming is one way to preserve. No, it is yes, it is not just one way, but it is one way. Shrinking bumblebee species has made a bigger headline recently. No, it's not that. So it's just 1 and 2. So it's both 1 and 2. Do you agree? Quickly let me know. Learners, those who are live with me, quickly comment and let me know. Do you agree or not? Yes. Those who are live with me, quickly. So it's both 1 and 2, right? Because we read this. अभी अब जब भी मैं आपके लिए पूरा पैसेज आपको इतने ध्यान से पढ़ के बताती हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको आंसर्स देखते, ऑप्शन देखते ही, क्योंकि मैं आपको पूरा पैसेज समझा ही देती हूँ ऑलमोस्ट, राइट? देखिए नेक्स्ट.
According to the past, which of the following have adversely affected the Earth's capacity to produce food? ये तो हम सबको पता है. हमने किया था ना कि फॉरेस्ट को काट के हम लैंड बना रहे हैं, फिर लैंड में हम पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से हम कैपेसिटी जो है कम कर रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल, दिस इज वन रीजन. यूज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, यस, दिस इज द सेकंड. फार्म फायर्स टू बर्न विंडोज, नो, दिस इज नॉट द आंसर. इट्स 1 and 2, both 1 and 2. राइट. ये तो मैंने आपको समझाया भी था. पूरी ऐसे इमेज ये जो मैंने दोबारा बनाई है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बना के समझाया था. राइट. चलिए देखेंगे नेक्स्ट. Which of the following is or are true with reference to the information provided in the passage? True बताना है. For any global potential source of danger to be considered, it must be severe enough to destroy the human race. No. Our dependency on monocultures does not contribute to famines. That's wrong. हमारी does not contribute. Yes, it's true. हम monocultures पर dependent है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वजह से भूखे रह रहे हैं हम, ठीक है, या crop cultivation नहीं हो रहा. More of crop failures and famines are projected for future. No. It's just two. Just two. Infer नहीं करना है, right? सिर्फ two. तो only two. सिर्फ second है जो कि सच है passage के according, बाकी नहीं. Next. According to the passage, what is imposing severe threat to our food? क्या है हमारा severe threat? Shrinking biodiversity, famines and crop failures, decreasing soil productivity, all 1 2 3 सारे ही जो है वो सिवियर थ्रेट हैं हमारे फूड को इम्पैक्ट करने के लिए. बताएंगे लर्नर्स. See, if you do not respond, that's going to be trouble for you. Next one. Which of the following is most similar to the word given? Relying. Relying के लिए कौन सा word synonym है? किसी पे depend होना. So snipping, pledging, envisaging, questioning, counting. That is dependent. I can count on you like 1 2 3, like, so I can count on you. That means I can depend on you. So depending. E. Option E is a synonym. Then, which of the following, you have to fill in the blank. Progress is possible. Farmers need to diversify and again we want to diversify and kill. No. Wild species, no. They need to preserve, maybe yes. Consume, no. Neglect नहीं करना है, abandon नहीं करना है. Yes, preserve. हमें diversify करना है और हमें preserve करना होगा हमारी wild species को, ठीक है. अभी तक ही US में सिर्फ 1% तक ही ऐसा हुआ है. So it's a long way to go. Right, a long way to go. Then next. Most similar for famine. Most similar for famine. Abundance, adequacy, affluence, scantiness, excess. मैंने आपको बताया था famine का मतलब कमी. So scantiness, because इन ये सारे synonym है, इन सब का मतलब ही excess or maybe more, like more and more. That's abundance, adequacy, affluence, excess. But scantiness means lacking. So famine is lack of food, right? So it will be option D. Next one. Most opposite. Sustaining. Sustaining के लिए opposite. Growing positive है. Sustaining के लिए opposite negative word होगा कोई. Shrinking, yes. कम होना, कोई चीज ड्रॉप हो रही है. सस्टेन मतलब आपने मेंटेन करके रखा है वो चीज. श्रिंक मतलब वो चीज ड्रॉप हो रही है, ठीक है.
सो ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या है, आपको वर्ड्स इतने डिफिकल्ट नहीं दिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना होगा डायरेक्शंस का। ये वर्ड तो इजी था आपके लिए आई गेस टू आइडेंटिफाई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखेंगे अगर लिखा है इम्पोर्टेंट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ओके, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आपको रिप्लेस करना है। देखिएगा, as the bus make a turn, it collided with the van. Collided, that's in past. The sentence is in past, so we cannot say make a turn. Made. क्या आना चाहिए? Made. Made, made, made. ये रहा made. As the bus made a turn, it collided with the van. Is it clear? Quickly tell me. See, any sort of confusion, you have to let me know. Alright, next. Some residents are still wait for help days. अब देखो R दिया है तो wait नहीं आ सकता, waiting होना चाहिए. It should be waiting. So some residents still waiting for help days. Waiting, it's here, that's it. Only one option we have with waiting. So it's like waiting for help. Next one. He was known to work hard and paying attention. अब देखो, he was known to work hard. That's wrong. known to कब आता है? know to आता है जब आगे हम कोई person specify करते हैं। अगर आप कोई action या कोई activity mention कर रहे हैं तो हम for use करते हैं know के साथ, और वो action ing form में होता है। So he was known for working hard. Option D. He was known for working hard and paying attention to the details. So paying ing form, working again ing form. Any confusion? Use of preposition with this word no, I have explained you here. Please make a note of it, because if you in case forget, it might trouble you later. Next one. This is the second time the boat race has been moved off the Thames. Quickly. So this is the second time the boat race has been moved off. अगर has been है तो यहाँ third form आना चाहिए, moved off. Okay, moved off the Thames. अच्छा, just a minute. Thames is the river. So river के अंदर जा रहे तो off नहीं ले सकते. It will be into. Moved into the river. Moved into the Thames. Okay, Thames is the name of river based on which Kingston, that is in London, it is situated. Okay, next. The baker cut the cake between pieces. No, cut the cake into pieces. किसी भी चीज को हमेशा pieces में किया जाता है तो into होता है, between नहीं आ सकता. The baker cuts the cake into pieces before adding a layer of buttercream. So it's into. So it is cake into pieces here. C. Next. Okay, we have directions. There are words numbered 1, 2, 3, 4. One of these 4 words may either be misspelled or inappropriate in usage. You have to find out that word. If everything is right, you will mark it as all correct. Let's see. Motor vehicles are prohibited. आगे बढ़ने की जरूरत है क्या गाइस? बताएंगे बच्चों फटाफट. Prohibited I होता है, so ऑप्शन 2 में गलती है, तो यहाँ पर मार्क कर दीजिए बी. तो पहला स्टेप है स्पेलिंग देखने का, दूसरा स्टेप है ग्रामर देखने का. ठीक है, चलो जैसे ही हम पढ़ रहे तो हमें स्पेलिंग गलत दिख रही तो हम मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट. Diet and exercise can influence a person's weight, but hereditary
is also a factor, not hereditary. Heredity नाउन चाहिए ना हमें कि हेरिडिटी भी एक फैक्टर है, ठीक है. डाइट एक्सरसाइज एक फैक्टर है, बट हेरिडिटी भी एक फैक्टर है कि आपका वेट इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता, ठीक है. सो इट्स ऑप्शन 4 फॉर अस, दैट्स डी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Going on to the next one. Although she's a dreadful figure skater, the girl actually enjoys playing tennis more than the sport she excels in. Spelling सबका ठीक है, usage भी सबका ठीक है. अगर हम पढ़े तो देखिए, spelling सबका ठीक है, right? She's a dreadful figure skater. The girl singular enjoys. She excels in. It's absolutely fine. This is all correct. There is no mistake here. No error here. Everything's right. Next, the symptoms of depression can include poor appetite and weight loss. Now, it's simple. यहाँ पर spelling error है, आप मुझे फटाफट से बता दीजिए. मैंने आपको hint दे दिया है कि spelling error है. बताएंगे फटाफट से learners. I don't want you guys to get confused or to not being able to answer for such simple questions. Spelling error, it's appetite. I hope that you guys know the meaning. Meaning is like diet. Okay, किसी का diet, किसी का खाने का क्षमता, तो appetite का spelling में double P आता है. Appetite. So it's option C because third one is wrong. Option C, appetite. Okay. So guys, spelling देखना है. अगर spelling देखो, spelling तो आप जब पढ़ रहे हो सेंटेंस तभी आपको पता लग जाएगा कि 4 में से कोई यदि एक गलत है तो, ठीक है. खास ध्यान रखेंगे इसका. देखिए नेक्स्ट. अच्छा भाई, डायरेक्शन देखो. some words have been highlighted, you have to replace the words. अगर नहीं तो no rearrangement is required. अच्छा, rearrange करना है. तो शी इज डिफिकल्ट. अच्छा, ये ए बी सी क्या वर्ड्स की जगह बदलनी है या वर्ड्स जैसे हैं वो ठीक है. शी इज difficult girl at times she can be extremely amicable to deal with. She is amicable but she can be difficult to deal with. so A और C की जगह बदलनी है हमें. तो क्या होगा? CBA. ये रहा CBA, क्योंकि मीनिंग डिफिकल्ट, कभी कभी वो डिफिकल्ट हो जाता है उसके साथ डील करना. वैसे तो वो एमिकेबल है. एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली. यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है. शी इज एन एमिकेबल गर्ल. ओके, तो यहाँ पर मीनिंग के अनुसार आपको अपना आंसर में वर्ड्स जो है फिट. अब यहाँ पर आपकी ब्रेन पूरी तरह से इस्तेमाल की जा रही है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है. देखिए, as one of the crew made overboard, rescuers save heroic efforts to fell him. As one of the crew fell overboard, वो गिर गया. Rescuers made heroic efforts to save him. C लास्ट में आना है और C यदि not C, B लास्ट में आना है. B लास्ट में आ रहा है, वो यहाँ पर है. Fell C पहले आ रहा है, तो ये रहा आंसर CAB. It's option C, AB, that's B. So see, it's good. Nice questions. With hard dedication and अब देखो, with hard work and dedication, तो C पहले आ जाएगा. Dedication B के जगह पर आ गया, तो CAB होना चाहिए. Option B. With hard work and dedication, he hoped to earn the appreciation of his peers. वो वाहवाही बटोरना चाहता था, वो expect कर रहा था. That's right. CAB. Next one. To lay out the straightened rug, the maid crimpled several heavy books on the edges. No. To straighten out, उस rug को सीधा करने के लिए, the maid laid down क्रिम्पल्ड रग. क्रिम्पल्ड का मतलब जो कि एकदम गुड़मुड़ फोल्डेड था के वियर तरीके से. सो क्रिम्पल्ड होता है जैसे हम रग्स को कैसे रख देते हैं, कभी आप फोल्ड करके रख देते हो, कैसे भी रोल करके रख दिया. तो उसको स्ट्रेट करने के लिए, टू स्ट्रेटन आउट द क्रिम्पल्ड रग, द मेड लेड सेवरल हेवी बुक्स ऑन द एजेस. उसने कॉर्नर्स पर बुक्स रख दी थी उसको सीधा खोलने के लिए. सो इट विल बी
B, C, A. Yes, option A has B, C, A. So it's option A, B, C, A. Next one. As my car broke down, I trekked to the grocery. It took me almost an hour to do so. Okay, अब ये है आपके लिए पूरा का पूरा arrangement. Sentence arrange करना है आपको, देखिए. As my car broke down, I had no choice but to make a trek to the grocery. A, D. B, a trek to the grocery. Store, देखो grocery के साथ store. On foot मतलब पैदल. Something that took me almost an hour to do. Something that took me almost an hour to do. Let's see. A, D, B, E, C. It's here. Option C. Very simple. Why it is simple? Because it was a story. Simple sentence. But देखो grocery से हमें मिला store. अगर B, E भी pair मिल गया तो B, E pair कहाँ पर दिया है? यहाँ पर, और कहीं दिया ही नहीं. आप आंसर ऐसे ही लगा सकते हो. कुछ नहीं करना, ऐसे ही आंसर मिल गया. पूरा सेंटेंस जोड़ने की भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट. ये आइस किसके साथ जाएगा? The figure skater took ice trying to impress the judges. Yeah, dangerous tumbling stunt on the ice. CD is a pair. Let's see CD. यहाँ पर है CD और कहीं नहीं है. So it's B. This. As the audience watched with high regard, the figure skater took a major risk on an extremely dangerous tumbling stunt on the ice trying to impress the judges. So it will be B, E, A, C, D. ठीक है? B, E, A, C, D. That's the correct answer. Next one. And Kindle fires. Okay, iPads and Kindle fires. So EA forms a pair. EA is here, EA is here, EA, EA. Oh my god, a lot many EAs. So portable devices such as iPads and Kindle fires are becoming increasingly popular. ESC. Now EAC, it's here, and it's here. So we have one more elimination here. So increasingly popular because they can be carried easily from one place to another. So it's this ESCBD because ESC ही हमारा शुरुआत हो रही है उससे. So हमारा आंसर होगा option E, that is ESCBD. Learners, this kind of questions are not difficult अगर आप relate कर लेते हैं initial part और किसी भी part of sentence का last part. ठीक है, आप pairs बनाने की कोशिश कीजिए. वो pairs के साथ आप उनको क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस को eliminate कर सकते हैं. Okay, now next one. It says the rescuers workers still managed to pull two injured people to rubble of the, yes, to pull two injured people. AE एक pair बन रहा है. AE यहाँ है, AE यहाँ पर है. बाकी options को eliminate कर दीजिए. So a lot of buildings came tumbling down. Tumble के साथ down आता है तो CB भी बन गया पेयर. अब देखो CB भी बन गया पेयर, ये रहा. आंसर मार्क कर दीजिए. CBAE, अच्छा CB यहाँ भी है. A lot of buildings came tumbling down after the massive hurricane. The rescue workers still managed to, yes, ये बाद में ही आएगा. The rescue workers AE बाद में ही आएगा तो CBAED. This is option D will be the correct answer. Because हम ये पहले नहीं कह सकते still managed. Still managed वो बाद में आएगा कि भाई इतनी सारी buildings गिरी फिर भी rescue workers ने manage कर लिया. Okay? देखते हैं next one. Error बताना है आपको. ठीक है? The seats to the forefront of the dining. Very simple, to or towards. Option 1 में error है क्योंकि to का मतलब होता है also. Okay? The seat towards the forefront of the dining table always occupied by the head of the family. To नहीं होगा, towards or on the forefront. Okay? गलत preposition का वहां पर यूज है या गलत शब्द का वहां उपयोग है. आपको on यूज करना है या towards यूज करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे error. As a commuter in the summertime,
Rose made sure she drove a car with a worked up air conditioner. बताएं. As a commuter in the summertime, Rose made sure she drove a car with a worked up air conditioner. Quickly. फटाफट से बताएंगे guys. It is not at all difficult. ओके कम्यूटर आपको पता है जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, सॉरी जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है. क्विकली. अच्छा वर्कअप बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज को एकदम से रेस्क्यू करना या फिर किसी चीज को एनर्जाइज करना. तो यहाँ एयर कंडीशनर को मे बी वो ठीक कराने की बात कर रही हैं कि वो हमेशा इंश्योर करती थी कि उनका एयर कंडीशनर चल रहा हो जब वो कार ड्राइव कर रही है. ठीक है. दैट्स व्हाई देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके नेक्स्ट. Because the candidate had years of experience in sales, he was quickly hired. कितना easy है ये. He was option 3. was आएगा ना, were क्यों आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल किया जाता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये. राइट. यस. नेक्स्ट वन. The debutante teenager spent an enormous amount of money on a dress that she planned to wear only one time. अच्छा ये देखो debutante प्रोनाउंसिएशन सेम है, ई लगा है, ये फीमेल के लिए यूज होता है. डेब्यूटांट जिसमें ई नहीं होता दैट्स फॉर मेल. ओके तो राइटिंग में इसको याद रखेंगे. द डेब्यूटांट टीनेजर स्पेंट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ an enormous amount of, not amounts, it's option 2 that has the error. Okay, yes, chalo, so that's option 2 because amounts nahi, wahan par sirf amount aana chahiye, to option B mein error hai. So this is where the session comes to an end. These are the practice questions for the day learners, and this was IBPS CLERK Prelims 2020. So I'm going to see you again tomorrow. Keep learning, keep growing, and keep supporting PendulumEdu. Learners, kindly like and share the video and subscribe it if you haven't subscribed the channel yet. So please subscribe it right away. Thank you so much for joining in.